Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Dear students, you know that due to coronavirus, the whole country has locked down. The country is struggling, and teachers, schools, and lack of education. So we start again online class. You must take advantage of this opportunity. This connection is not limited. If you have any question, you can contact me on WhatsApp. I'm your teacher, myself, Miss Aksa Ikram from Metropolitan Foundation School. Class 4, subject computer, and this is our revision video of computer. First of all, you have question answer. I will read. You listen and find in your copy and learn in your home. स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं. इन क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है और अपने घर में टेस्ट देना है. ये आपकी एक एज ए रिवीजन वीडियो है जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU? What is the main function of CPU? This question is chapter from processing and storage devices. How do you copy a paragraph? This question is chapter from editing in MS Word. And question number 3 is write steps to save a presentation. Now question number 3 is write step to save a presentation. And this question is related to the chapter Introduction to MS PowerPoint. What is Internet? Now question number 5 is write a step to save a presentation. And question number 6 is which tool is used to type text on drawing canvas? This question is related from chapter More Fun with Tux Paint. What is presentation? And your question number 7 is what is presentation? This question is related from chapter Internet. Now question number 8 is how do you add a slide in a presentation? This question is related from the chapter Introduction to MS PowerPoint. What is, and the next question is question number 9. What is World Wide Web? This question is related to the chapter the Internet. And the last one question is question number 10. Name any 3 magic effects in Tux Paint. This question is related to the chapter More Fun with Tux Paint. These are the questions, these 10 questions you learned in your home and test and do test. ये 10 क्वेश्चन हैं जो आपने अपने होम के अंदर लर्न करने हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए. नाउ टर्न इन योर नेक्स्ट स्लाइड. एंड योर नेक्स्ट वर्क इज़ शॉर्ट नोट. You have 2 short note. One is hard disk and 2 is CD. Now first is hard disk. I will explain. Hard disk, the main device used by a computer to store information is hard disk.
It has a very large storage capacity. We can read as well as write data on the hard disk as many times as we need. I will explain in Urdu. In this topic, इस टॉपिक के अंदर हमें शॉर्ट नोट राइट करना है हार्ड डिस्क के ऊपर. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. द मेन डिवाइस यूज बाय अ कंप्यूटर. हार्ड डिस्क क्या है? एक मेन डिवाइस है कंप्यूटर की टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, इज़ हार्ड डिस्क. इट हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसके अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है. वी कैन रीड एज वेल एज राइट डेटा, जो हम ईज़िली रीड कर सकते हैं, ईज़िली अपना डेटा राइट कर सकते हैं ऑन दी हार्ड डिस्क के ऊपर, एज मैनी टाइम एज वी नीड. जितनी भी टाइम हम चाहें हम अपना डेटा रीड कर सकते हैं और उसके ऊपर हार्ड डिस्क पे राइट कर सकते हैं. इसके अंदर बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये मेन स्टोरेज डिवाइस है किसकी? कंप्यूटर की. एंड योर नेक्स्ट स्लाइड इज CD. शॉर्ट नोट है ये CD पर. A compact disc, also known as CD, is a portable storage device. It is a circular disc made of a hard plastic material and is coated with a very thin layer of metal. It can store data up to 700 MB. Now I will explain in Urdu. ये आपको शॉर्ट नोट दिया गया है. CD के ऊपर लिखा हुआ है अ कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? CD की फुल फॉर्म. अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑल्सो नोन एज CD. कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग CD को बोलते हैं. ये CD की फुल फॉर्म है. इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ अ सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ अ हार्ड प्लास्टिक मटेरियल. ये एक डिस्क है जो मेड की गई एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से, एंड इज़ कोटेड विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ मेटल. जो इसके ऊपर एक थिन लेयर लगाई गई मेटल की. इट कैन स्टोर अप टू 700 MB. ये अपने अंदर स्टोर करता है 700 से भी ज़्यादा डेटा. ओके, नाउ टर्न इनटू नेक्स्ट स्लाइड. Now exercise number D is write the full form of the following. I give you some word. You write this. You write the full form of these words. Like number 1 is ALU, and tell me the full form of ALU. You know? Okay, I will tell you. Now the full form of ALU is arithmetic logic unit. And how to spell arithmetic? ARITH, arith, EMETIC, arithmetic logic. And how to spell logic and unit? I will tell you. LOGIC, logic, and the last word is unit. UNIT, unit. Arithmetic logic unit. And number 2 is CU. And tell me the full form of CU. I will tell you. The full form of CU is control unit. And how to spell control unit? CONTROL, control unit. UNIT, unit. And the third one is MU. And the full form of MU is memory unit. Tell me the spelling of. I will tell you the spelling of memory unit. MEMORY, memory unit. UNIT, unit. And the fourth one is PROM. And the full form of PROM is
Programmable, read only memory. And how to spell programmable read only memory? Programmable, PROGRAMMABLE. Programmable, read READ, read only, 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 memory, MEMORY. And the fifth one is EPROM, EPROM. And the full form of EPROM is erasable, programmable, read only memory. And how to spell erasable programmable? Is that it is erasable, ERSABLE, erasable, programmable, 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 read READ, read only, 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 memory, MEMORY. And the sixth one is EEPROM. And the full form of EEPROM is electrically erasable, programmable, read only memory. Electrically, how to spell electrically erasable programmable? It is ELECTRICALLY, electrically erasable, ERSABLE, erasable, programmable, PROGRAMABLE, and read only memory. And the last and the seventh one is ROM, read only memory. And the eighth one is RAM, random access memory. And how to spell random? RANDOM, random access, ACCESS, random access memory. These are the abbreviation. It is completed in your computer copy. You learn and do test in your home. And the next slide is fill in the blanks. Now first one is a USB is a dash device. A USB is a dash device. Number 2 is a dash is an accessory used to solve problem. वो कौन सी accessory है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, या वो कौन सा इक्विपमेंट है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. नंबर 3, द रिज़ल्ट इज सेंड टू द डैश डिवाइस. हम अपना कंप्यूटर का रिज़ल्ट, अपने वर्क का रिज़ल्ट कौन सी डिवाइस को सेंड करते हैं. नाउ नंबर 4, a hard disk has a very large dash capacity. हार्ड डिस्क के अंदर एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैपेसिटी होती है. किस चीज़ की? यू राइट आंसर. ओके, आई गिव यू ओनली हिंट, यू राइट द आंसर. नंबर 5, DVD कंटेन्स डेटा मोर देन डैश. DVD कंटेन करता है डेटा मोर देन डैश, किससे ज़्यादा. नंबर 6, sound recorder program is this line is missing. This line the point number 6 is the sound recorder program is used to dash voice. Yes. Number 8, which tab opens the door backstage view? Which tab open the door dash backstage view? Number 9, which of the following at mean close-up view dash?
Which key should be pressed to run a slide show? डैश वो कौन सी की है जो हमारी स्लाइड को शो करने के लिए हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज डू प्रैक्टिस ए डायग्राम ऑफ माउस एंड मॉनिटर. इन योर होम यू डू प्रैक्टिस अ डायग्राम. आप होम के अंदर अपने घर के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की. Which one diagram? The first one is mouse and the second one is monitor. This is your revision work and this video is very important for your final examination. In your home, you watch my video completely and understand what I am saying. Last one slide is take the correct answer. Now number 1 is which tab opens the backstage view? And the option is A. File, B. Home, C. Insert. Now number 2 is which of the following are boxes for text and pictures on a slide? And the answer is A. Tabs, B. Placeholders, and C. Zoom slider. And the third one is where is the status bar present on the PowerPoint screen? Where is the status bar present on the PowerPoint screen? And the option is A. Top, B. Bottom, C. Left. And point number 4 is which of the following means close up view? Which of the following means close up view? And the option is A. Zoom in, B. Zoom out, and C. None of these. And the fifth one is which key should be pressed to run a slideshow? Which key should be pressed to run a slideshow? And the option is A. F1, B. Tab, C. F5. These exercises are related from the chapter Introduction to MS PowerPoint, page number 80. You done in your computer copy. You only understand, learn, and do test in your home. This video is only for revision video for you. You can watch and listen, be carefully and understand what I am saying. And the all work do practice in your home and the all work learn. In this video, I will give you 10 question answers, abbreviations, short note, fill in the blanks, and the last tick the correct answer. The all work are complete in your computer copy. You search. Dear students, ये तमाम काम आपकी कॉपी के अंदर मौजूद है. आपने इन्हें सर्च करना है. मैं आपको साथ साथ चैप्टर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस चैप्टर का वर्क है. आपने वो ओपन करना है, लर्न करना है और अपने होम में इसे बैठकर टेस्ट लेना है. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए. So thanks for watching my video.
अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।